Okay, let's continue with this breakup of transaction, assigning debit and credit natures to each of them. Transaction number 8 is D. Albert gave loan of 10,000 by check. So increase was bank and loan from D. Albert. ठीक है? Assigning natures will be bank is an asset. ठीक है? तो asset is increasing. तो क्या nature assign हो जाएगी इसको डेबिट and liability भी increase हो रही है. So simultaneously I'm gonna assign nature of credit to it. ठीक है? Any problem, guys? Next, receive 2,800 commission by check. So bank is increasing by check है. Commission receive is also increasing because इससे मेरा capital increase होता है. ये एक income है. Okay? So bank is increasing. It's an asset again. इसके लिए क्या nature assign होगी? Debit. Income increases your capital. So इसके साथ nature क्या assign होगी? Credit. Okay? Let's move forward. Transaction number 10. Bought motor van by check. So motor van is increasing and bank is also increasing. Motor van increase हो रहा है तो क्या हो जाएगा? Asset है. Non-current asset increase debit and bank decrease होगा. Sorry, my bad. So bank is decreasing. The bank will be credited. Number 12. Return goods to R. Simon. सही है? Now we need to identify इसमें increase और decrease क्या हो रहा है. We are returning goods to R. Simon. R. Simon से हमने goods पहले खरीदे थे on credit. ठीक है? उस डेट पे क्या किया था हमने? उस डेट पे हमने इसकी liability increase कर दी थी अपने ऊपर. Obligation to pay had increased on that date. आज we don't owe the same amount, तो इसकी liability क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी हमारे ऊपर. हम इसको उतना amount owe नहीं करते जितना हम पहले करते थे. तो R. Simon's account will decrease and R. Simon was a trade payable. And return outwards will also decrease your inventory. ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा शुरू में. आर साइमन को नेचर क्या दी जाएगी? लायबिलिटी डिक्रीज ऑन दी डेबिट साइड और रिटर्न आउटवर्ड से इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो इन्वेंट्री डिक्रीज ऑन दी क्रेडिट साइड. ओके. नंबर 13. बॉट गुड्स पेइंग बाय चेक. सो परचेजेस इंक्रीज क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज होती है एंड बैंक डिक्रीज. Purchases are always debited because it increases your inventory and bank is your asset. 14. Bought equipment on credit from C. Tom. ठीक है? In this case, goods को mention नहीं कर रहा. जब goods का term नहीं आ रहा तो we're not gonna use purchases, sales, return inwards and return outwards. Directly equipment लिखा हुआ है तो हम equipment का ही नाम लिखेंगे. Hello. Is it clear now? Hello. Alright, so equipment is increasing in this one. जब तक goods mention नहीं होंगे तब तक हम purchases, sales, return outwards नहीं लिखेंगे. And second effect is C. Tom's account. That is also increasing because C. Tom is a trade. जब हम buy कर रहे होते हैं तो we need to pay to this guy, right?
and we haven't paid anything to him. Equipment is an asset, increase हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा. CTOM is a liability, increase हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी. Alright. Number 15. D. Philip returned goods to us. 700. Now we need to remember D. Philip से हमारा क्या relationship था. Okay. D. Philip returned goods to us. पहले तो हमें return आइडेंटिफाई करना है, ये रिटर्न इनवर्ड्स है. और दूसरी चीज़ ये देखना है कि डी फिलिप से हमारा रिलेशनशिप क्या था. वी हैड परचेज गुड्स फ्रॉम डी फिलिप वर्थ 9800. ओके, तो उस डेट पे 7th को हमने उसका अकाउंट इंक्रीज कर दिया था. यहाँ पे देखें, सही है ना. मैं दिखा भी देता हूँ फॉर द सेक ऑफ एविडेंस. हमने डी फिलिप का अकाउंट इंक्रीज किया था बिकॉज ही ओ टू अस, और सेल से डिक्रीज कर दिया था क्योंकि इन्वेंट्री कम हो रही थी. टुडे ये बंदा हमें गुड्स वापस कर रहा है एंड ही डिड नॉट पे एनीथिंग टू अस. अभी तक ये हमें ओ करता है. कितना अमाउंट ओ करता था? 9800. आज हमें गुड्स वापस कर रहा है 700 के, तो इसका अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. नाउ पोस्टिंग दिस, डी फिलिप्स अकाउंट विल डिक्रीज D. Philip was a trade receivable. Alright. और हमारे पास गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स. अब हम नेचर असाइन कर देते हैं इसको. रिटर्न इनवर्ड्स, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगा. और डी फिलिप डिक्रीज हो रहा है, ही इज एन एसेट, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. राइट. Now, transactions such as 17 should be very simple and straightforward. Advertising से capital decrease हो रहा होता है, expense है, और पे करें तो बैंक भी decrease हो रहा है. तो advertising is your expense. Expenses are always debited क्योंकि capital decrease हो रहा है हमारा. And bank is also your asset. ये credit हो जाएगा. Alright. That's crediting. When you're receiving a check or cash. Asset. Advertising is your expense. इससे तो आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है ना. एक्सपेंसेस से आपका ओनर्स क्लेम डिक्रीज होता है. मैंने आपको स्कूल्स की एग्जांपल दी थी. स्कूल्स पैसे क्यों बचाते हैं? Why are they cutting down their expenses? ताकि ओनर खुश रहे उनका. ठीक है, वो अपना इम्प्रेस सिस्टम से पैसे सेव करके हर महीने ये ओनर को दिखाना चाह रहे होते हैं, देखिए हमने कितनी बचत करके दी है आपको. सो दैट बचत एक्चुअली मीन्स व्हाट? दैट्स increasing their owner's claim, right? They're actually pleasing the owner. That's crediting. वो इनकम बन रही होती है. Expense. Advertising is your expense, right? Expenses से आपका owners claim या capital decrease हो रहा होता है. Debiting. Yes. Yes. All right. Now let's just solve the rest of them. Okay, we were on transaction number 18. Now 18 is confusing because students actually are not able to comprehend what is office use referring to. Withdrew 2,500 cash from bank for office use. Office use का मतलब ये है कि these are not drawings, okay? ये transaction ये बता रही है कि ये इससे आपने बैंक से पैसे निकाले और इसका पर्पस डिफाइन नहीं है कि आपने क्यों निकाले. यानी कि अभी आपने ये ट्रांजैक्शन कर ली कि जाके एम्प्लॉय को कह दिया बैंक से पैसे निकलवा लो, ऑफिस का काम है.
पर्पस तो नहीं बताया ना कि जी रेंट भरना है, क्या करना है। ये एक अलग ट्रांजैक्शन काउंट होगी, बट ऑफिस यूज ये डिफाइन कर रहा है कि दिस कैश इज नॉट विड्रॉन फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स नहीं है। ऑलराइट, सो कैश इंक्रीज हो जाएगा एंड बैंक डिक्रीज हो जाएगा। कैश इज इंक्रीजिंग तो उसकी नेचर क्या साइन होगी, डेबिट। बैंक इज डिक्रीजिंग, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नंबर 19, can anyone tell that? Guys, open up your mics and tell me. Number 19. See, Tom is a trade payable. उसका account decrease हो रहा है हमारे पास. We don't owe the same amount to him anymore because we're returning equipment to him. Equipment वापस करें तो equipment ही लिखेंगे, goods नहीं लिखेंगे. Okay? That is also a common student error. Equipment is decreasing. Equipment is decreasing, so that will be credited क्योंकि asset decrease हो रहा है और liability decrease हो रही है. Very good, Zoe. C Tom का account will be debited. Number 21, paid cash to R Simon. So R Simon going finance. Yes, we don't owe to him anymore the same amount as we did initially. Yeah. अब इसको nature assign कर देते हैं. R Simon is a liability. Our liability is decreasing. Yes, and cash will be credited because asset is decreasing. All right. 22. Received 2,900 cash from D Philip. Cash is increasing because we are receiving it, and D Philip's account will. He doesn't owe us the same amount as he did initially. So cash will be debited. D Phillips account will be credited. ठीक है. 24, paid rates by cash. Rates जो होते हैं वो वाटर टैक्सेस और जो भी प्रॉपर्टी टैक्स होता है हमारा, उसको कहते हैं. सो रेट्स विल डिक्रीज योर ओनर्स क्लेम, इट विल डिक्रीज योर कैपिटल, तो एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा. वेरी गुड. 25, received commission by cash. Increase. कमीशन रिसीव्ड इनकम होती है हमारी. ऑलराइट. यस. यस. Yes, very good. So I'm gonna assign nature cash will be debited, commission received will be credited. Okay. Then we have 27. Can anyone do 27 to me, Farid? Are you there? Okay. Feed. Very good. So the nature is assigned will be bank will be credited, C term will be liability कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगा. Alright. Number 29 and 20, 31 मैं यहीं पे कर देता हूँ. 29 is paid salaries by check. So salaries decrease and bank also decrease. Salaries will be debited क्योंकि expense है. It decreases your capital equity. Bank will also decrease तो asset है, ये credit हो जाएगा. 31, withdrew 5,000 by check for own use. Own use का मतलब क्या है? Drawings. Okay. Own use means drawings. और बैंक भी क्या हो रहा है, बाय चेक है तो डिक्रीज हो जाएगा. ड्राइंग से हमारा कैपिटल क्या हो रहा होता है, डिक्रीज.
Yes, and bank will be credited, right? So now we're done with assigning natures to each title. We're gonna be starting up with double entry system today. Okay. Before we write down the definition of double entry system, we're gonna discuss five different components of it. पहला component is journal entries. Second is ledgers. ठीक है. इसका एक फॉर्म आपने स्कूल्स में सुना हुआ होगा टी अकाउंट्स. दूसरा फॉर्म होता है सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट और रनिंग बैलेंस अकाउंट. ठीक है. थर्ड वन इज ट्रायल बैलेंस. The first three steps are known as bookkeeping. First three steps are known as bookkeeping. बहुत सारे टीचर्स और फ्रैंकवुड की बुक भी ये सजेस्ट करती है कि डबल एंट्री सिस्टम्स जो है वो फर्स्ट थ्री स्टेप्स ही हैं. आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद दिस बिकॉज ये सारा डेटा आप इवेंचुअली यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि सारा रिकॉर्ड आप यूज़ कर रहे होते हैं ये भी बनाने के लिए और ये भी बनाने के लिए. तो इन दोनों में भी इन सब के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों चीज़ें अलग होंगी और फिर इसको अलग कर दिया जाएगा. द लास्ट टू स्टेप्स आर नोन एज अकाउंटिंग. ठीक है. अब इसकी इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग. Okay, so bookkeeping means recording of transactions on daily or monthly basis. Farid, can you hear me? Alright, so bookkeeping के बारे में अच्छा ये तीनों चीज़ें मीन्स कि ये डेली अपडेट हो रहे होंगे या मंथली बेसिस पे अपग्रेड हो रहे होंगे. ठीक है. अकाउंटिंग मीन्स ये सारी डेफिनेशंस आती हैं एएस में भी आती हैं. एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड presenting business transactions on quarterly. क्वार्टरली के साथ ब्रैकेट में लिख लें 3 months, semi-annually,
half yearly, 6 months लिखने इसके साथ, और yearly slash annual basis, annual basis के साथ लिखना है 12 months। देखने में थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है डेफिनेशन, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे ना एवरी ईयर, उसका एक टाइम फ्रेम होता है। या तो आप ये एवरी 3 मंथ्स बनाते हैं, या एवरी 6 मंथ्स बनाते हैं, या साल में एक दफ़ा बनाते हैं। ऑलराइट, ये आपकी अकाउंटिंग पीरियड्स आप खुद एज एन अकाउंटेंट डिसाइड करते हैं कि आपकी बिजनेस की डायनामिक्स क्या है, कि कौन सा अकाउंटिंग पीरियड प्रेफरेबल है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस टीचर्स के लिए अब हाफ ईयरली इज़ अ बेटर वे टू डू थिंग्स, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बैचेस भी पढ़ा रहे हैं, जून जुलाई मई जून के भी बैचेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेफरेबल है ये वाला अकाउंटिंग पीरियड। कार मैन्युफैक्चरर के लिए क्वार्टरली, एवरी 3 मंथ्स, या डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के लिए एवरी 3 मंथ्स, क्योंकि टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग बहुत ज़्यादा है उनकी। ऑलराइट, सही है। एक्टर्स लॉयर्स के लिए कौन सा प्रेफरेबल है? ईयरली बेसिस। ठीक है, सो बिजनेस की डायनामिक्स डिटरमिन करेंगी कि विच अकाउंटिंग पीरियड इज बेटर फॉर ईच। ऑलराइट, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग मीन्स कि आप पहले एनालाइज करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन इनकम स्टेटमेंट में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि किस तरह जाएगी, वो हम एक चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, पहले तो हम ये 3 चीज़ें करना सीखेंगे। और प्रेजेंटेशन एक सर्टेन फॉर्मेट होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड होगी। और जर्नल एंट्रीज, आई एम श्योर what I recently heard is that teachers are not teaching this part of double entry system. ये MCQs में भी आती है और पेपर 2 में भी आती है। So surprisingly what they do is वो आपको ledgers में ही सिखा देते हैं डेबिट क्रेडिट करना, although this is a separate thing। तो जर्नल एंट्री सही होंगी तो लेजर सही होगा, ये भी चीज़ लिख लें अपने पास। तो ये अकाउंटिंग साइकिल आपको पता होनी चाहिए। इफ दिस इज करेक्ट, ऑटोमेटिकली लेजर सही हो जाएगी। ओके, टी अकाउंट सही होंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस सही होगा। ट्रायल बैलेंस सही होगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहीं से पिक करेंगे ट्रायल बैलेंस से। इनकम स्टेटमेंट भी सही होगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी सही होगा। ऑलराइट, सो ट्रायल बैलेंस इज द पिनिकल to prepare income statement and statement of financial position. This has to be correct. But for this to be correct, you need to be very good at journal entries. That is supposed to be correct. और उसके बाद T accounts, that also has to be correct. Calculation point of view से भी और posting point of view से भी. All right. So we're gonna start off with journal entries. बहुत simple है. Don't worry about it. Pick up this question. Make 4 columns. Date, particulars, debit and credit. डॉलर साइन लगाइएगा इसमें। डेट आएगी 2011 जुलाई। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, started business with cash investment 50,000. कैश इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। What I'll do is यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखूंगा
कैश को डेबिट कर दूंगा, दैट इज 50,000। इक्वल इफेक्ट होता है, हमने डिफाइन किया था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और आई लीव वन फिंगर स्पेस, इसी के ही नीचे लीव वन फिंगर स्पेस, और आई एम गोना राइट 50,000 इन द क्रेडिट कॉलम। सही है, ये हमने एंट्री पास कर ली है। दैट्स द फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द क्वेश्चन गिवन। सॉरी, कैश, कैश डेबिट होगा ना, एसेट है। करंट, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट लाइंस में होगा ये। पहले आप कैश लिखेंगे एक लाइन में, उसके नीचे वाली लाइन में कैपिटल लिखेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है, क्रेडिट को थोड़ा आगे करके लिखते हैं। लीव वन लाइन आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि टी अकाउंट्स बनाने के लिए काम आएंगी ये चीज़ें। रेंट इज एन एक्सपेंस, हमेशा डेबिट होता है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। सो रेंट विल बी डेबिटेड 550, कैश विल बी क्रेडिटेड 550। ठीक है, थर्ड वाला क्या था, वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मैं यहाँ पे ब्रेकअप देख लेते, ब्रेकअप हमने किया था। पेड 40,000 of the cash into the bank. So third is bank is increasing, बैंक डेबिट हो जाएगा। कैश डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, bought goods on credit from R Simon, fourth. So bought goods means purchases that are always debited। ठीक है, R Simon is a trade payable, वो क्रेडिट हो जाएगा। we're not supposed to write trade payable। अगर R Simon का नाम नहीं दिया हुआ तो फिर हम trade payable ही लिखते हैं। ओके, so 8,300, 8,300। Number 5, paid insurance by check। Insurance is an expense, पे किया है ज़ाहिर है हमने इसके लिए। So expenses are always debited because they decrease owner's claim in the business। 620, and bank credit 620। Alright, let's continue with this. Okay, number 7 is sold goods on credit to D Philip 9,800। So D Philip is a trade receivable, उसका account increase हो रहा है। See, I'm gonna be a bit fast with this because we kind of discussed breakup of transaction in detail, तो उसका रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड बिकॉज दे डिक्रीज इन्वेंट्री। ऑलराइट, नंबर 8, D Albert gave loan 10,000 by check, so bank is increasing, and loan from D Albert is also increasing, work liability है। अमाउंट दोनों पे देख लें इक्वल ही आएगा, सेम आएगा अमाउंट। ऑलराइट, I'm not gonna be making you learn कि एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। हमने ब्रेकअप काफ़ी डिटेल और इन डेप्थ डिस्कस किया है, तो प्लीज़ रेफर टू दैट अगेन। Number 9, receive 2,800 commission by check, so bank is increasing, commission received is an income जिससे हमारा कैपिटल या इक्विटी इंक्रीज हो रही होती है। ऑलराइट, bank debit and commission received credit, amount is 2,800। ठीक है, नंबर 10, bought motor van by check, so motor van is increasing, non current asset हम खरीद रहे हैं।
and bank is decreasing, एक current asset decrease हो रहा है asset. So motor van will be debited and bank will be credited by the amount of 4,500. All right. Number 12, return goods to R Simon. So R Simon is a trade payable that is decreasing 700, and return outwards will be credited 700. Number 13, bought goods 5,300 by check. So purchases increase, purchases debit हो जाएगा, bank credit हो जाएगा. You need to be good at this, okay? Just the way I'm doing it. मतलब आप transaction देखें and then you just pass the entry on. I mean mentally even. आप इतना अच्छा होना चाहिए इसमें. Number 14, just like teachers are doing at colleges. वो आपसे ऐसे ही बोल बोल के ना, वो क्योंकि खुद अच्छे होते हैं, that's why they're doing it so quickly and swiftly. आपको भी इतना ही अच्छा होना पड़ेगा इसमें. But we've discussed that in detail, तो please अब problem नहीं होना चाहिए, practice करनी ज़रूरी है इसके लिए. D. Philip returned goods to us 700. No, did we miss out 14? Yes, we did. 14 is equipment on credit from C Tom. So equipment is an asset, increase हो रहा है, debit हो जाएगा. हम वही copy paste कर रहे हैं जो हमने breakup किया था. Yeah, C Tom is a liability, credit हो जाएगा. 15, D Philip returned goods to us. So return inwards is always debited because inventory increase हो जाती है इससे. और D Philip is an asset, वो decrease हो रहा है, he does not owe us the same amount. तो उसका अकाउंट एक्चुअली हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, राइट. नंबर 17, पेड एडवर्टाइजिंग बाय चेक. सो एडवर्टाइजिंग इज एन एक्सपेंस, ऑलवेज डेबिटेड, बैंक विल बी क्रेडिटेड. कितना अमाउंट है? 17 का अमाउंट वॉज 750. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन द 18th. 18 को क्या है? विड्रू 2500 कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. सो कैश विल बी डेबिटेड and bank will be credited. Amount is 2,500. 19, return equipment to C Tom. So C Tom क्या होगा? Can anyone tell me? C Tom's account will be क्या nature post होगी? Guys, can you please close down your Snapchats and answer this? C Tom will be debited and equipment will be credited. Thank you. Amount is 400. See, I told you dual aspect concept क्या होता है? Equal effects on both sides. Debit credit पे equal effect रहेगा. Alright? Yeah, that's the point. 21, dual aspect concept यही state करता है. Pay 2,100 cash to R Simon. So debit credit बताओ ना मुझे. Now remember this for the sake of your interviews, guys, next year inshallah for unis. आप debit पहले बताते हैं हमेशा, credit बाद में बताते हैं. Remember this.
डेबिट हमेशा पहले बताया जाता है, क्रेडिट बाद में बताया जाता है, एंड देयर इज अ साइंस टू इट. वी ऑलवेज टॉक अबाउट कॉस्ट्स फर्स्ट और बेनिफिट्स फर्स्ट. आपसे कोई, आप जनरली किसी से कोई चीज़ें शेयर भी कर रहे होते हैं, एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप अपनी दुख की बातें ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस, राइट? So that's why we're prioritizing debit first and credit later on. Okay. 21st का amount is 2100. 22, received 2900 cash from D. Philip. Decrease. Tell me the natures, please. Yes, very good. So cash will be debited 2900 and D. Philip will be credited 2900. So let's keep it till here today, guys. You need to complete this at home. We've done okay, this. एंट्रीज ऐसे बनती हैं. द पर्पस टू टीच ऑल ऑफ दिस वाज कि आप एंट्रीज कैसे पास करते हैं. ऑलराइट. ना वो जो ब्रेकअप किया था ना, वो तो समझाने के लिए किया था, असल काम यही वाला है. आपने एंट्रीज डायरेक्टली पास करनी है. ब्रेकअप और असाइनिंग नेचर्स तो हमने सीखने के लिए किया था कि एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं. यू अंडरस्टैंड? और सबसे पहले वी लर्न आइडेंटिफिकेशन कि कौन सी चीज़ एसेट है, नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है. उसके बाद हमने ब्रेकअप सीखा था, उसके बाद पोस्ट नेचर असाइन करना सीखा था. एंड नाउ दिस इज द पार्ट दैट वी आर सपोज टू डू. इसको डायरेक्टली भी मैं करवा सकता था, बट देयर वाज नो पॉइंट इन डूइंग डायरेक्टली. अगर हम लोगों को यही सब नहीं पता होता तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट. So I see you guys tomorrow, inshallah. Make sure you finish this question and sending the rest of the questions on the WhatsApp group. All right. See you guys tomorrow, inshallah. Tomorrow is Friday. We have a class tomorrow, right? Yeah. All right. Take care. Bye bye.